syllabus they will be having a separate chapter on the packages. And one more example, that is 23rd assignment, that was dependent on these assignments. Okay, so this we will be covering today. So today we'll talk about the Java packages. Okay, the Java packages today. What is the basic discussion? We'll be talking about the what is exactly the package is. We'll have an examples of packages. Then we'll talk about the accession, that how we can access the classes which are written into the packages. What is the meaning of package dot star? That is we will be discussing. What is the meaning of import package dot class name? What is the difference between star and the class name? That will be discussing. And then what is a full qualifier name? We will be talking about sub packages. We will be talking about sending class file to another directory. How can we can send one class file to another directory? Then hyphen class path, how we can switch the class path. And we'll be talking about the 4 ways to load the jar files or the class file. Okay, and how to put two public classes in a package. Okay, जैसे हम अभी देखते हैं कि दो public classes एक package में नहीं रह सकते, तो अगर करना है तो किस तरीके से हम वो कर सकते हैं, that will be talking about it. Then what is static import and what is a package classes. So the basically that's will the flow of the today's session. So shall I move further now? Yes or no? Yes. Yes, sir. Yes, sir. सादा है क्या मेरा? हाँ नहीं नाही 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 तुम्ही आणलेलं तू नाही इथं ना घरी आहे माझ्याकडे. Oh yes, this one. Okay, so the Java package is a group of similar type of classes, interfaces and subclasses. फिर से एक मैं बता रहा हूँ. It is a group of similar type of classes, interfaces and sub packages. This you have to keep in mind. Okay, for example, if I am working on languages, so the package name will be lang. So all classes, interfaces and sub packages will be present to this. If I am working on the GUI, I will be having a Java X package, extension of Java. I want to work on swing components, the swing components. I want to work on networking, net. I want to work on input and output operations, IO. I want to work on date and all utilities of Java, util package. I want to work on SQL databases, SQL package. I want to work on AWT components, AWT package. So what is exactly the package? Package is a built-in package, built-in packages which we have into Java. These are some examples, but you will find there are 30-40 packages been available. But packages are nothing but a similar type of classes, interfaces and package, and there are two ways you can create a package. One is built-in packages, जैसे मैंने ये example में बताया. These are all built-in packages. Built-in packages मतलब क्या? These are provided by Java. Okay, so all packages with this name we are present into built-in package. And second package is that can we build our own packages? Yes, this is called as user-defined package. So in this chapter we will be learning about how we can create a package, that is user defined package, because ready made things we cannot change it. ये पहले already बन के रखा हुआ है, हमें सिर्फ अभी हम क्या कर सकते हैं, that will be understanding. So why to go for package? Again, the basic importance is that advantages, why we should think about packages. So the first advantages I want to highlight is that Java package is used to categorize the classes and interfaces so that they can be easily maintained. So one category, just if I want to work on some project, and that is the project is been divided into different modules, let's say admin module or the purchase module or a finance module. So what I have to do is that I will be creating a package, or finance related all the class files will be into the finance package. If I am working with the accounting department, all accounting related files. If I'm working with the production related file. If I'm working with the admin all class files should be put it into one package. So what this help you? This will help you to for easy maintenance. So if I want to do a maintenance, this will be very easy for me to go for maintenance. Okay, so I can understand कि मुझे admin panel में जाके change करना, so all admin folders will be updated. Okay. Now second most important advantage is that Java packages provide access protection. ये सबसे important access protection, यानी जैसे उस दिन मैंने बोला public private protected access specifier, तो encapsulation के लिए काम में आ जाता है whenever we are working with packages.
Okay, so encapsulation can be boosted with the help of packages. Third one, Java packages remove naming collision. नेमिंग कोलिजन यानी कि एक ही नाम के क्लासेस आप बहुत बार अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं. तो नेमिंग कोलिजन यानी बहुत बार आपने डिस्प्ले फंक्शन यूज कर सकते हैं, बट यू कैनॉट यूज डिस्प्ले फंक्शन इन सेम प्रोजेक्ट मेनी टाइम्स. ओके, सो यू कैन डू दिस वन बाय यूजिंग पुटिंग इनटू सब डिफरेंट पैकेज. सो ये आपका नेमिंग कोलिजन थोड़ा कम कर देता है. नाउ as far as the Java package is concerned, basically the hierarchy जो Java ने बना की है, this top most is a Java package. So Java dot आप हर बार लिखते हैं util package, java.awt package, java.lang package, java.swing package. It's okay. So this is the topmost, the first folder is called as a Java package. The internal folder is called as a sub packages, and the files which are present, these are the class files which are present into that package is called as a classes. Okay. So are you clear with the package and sub packages now? The main folder is called as a package. The internal folders which are present into this called as a sub packages, and the files which are present into that folder is called as a classes. Are you clear with this? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Now whenever you are working with the packages, you will be using the keyword called as a package. ये हमें use करना ही पड़ता है. And this should be the first line. So for example, if I am creating like this one second. Okay, so in this example, small example I am creating, I want to create a small file. So first line of the code should be the package. So कौन से folder में लिखना है? Now you have to make a habit of writing it into the first line should be the packages. So in which folder it will be there? So package keyword, it should be written in lowercase, and the name of the folder which will be maintaining this file. So my package, and this will be containing one class called as a sample, simple, sorry. Okay, और उसके अंदर आपको जो भी कोड लिखना है, you have written into this. So now ये अगर हम इक्लिप्स में काम करें तो हमें इसमें रन करने में कोई दिक्कत नहीं, राइट क्लिक करो, यू कैन रन इट प्रोग्राम. बट व्हेन यू आर वर्किंग विद द मैनुअल सिस्टम, मैनुअल मतलब क्या, अगर आप कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन के ऊपर रन आउट करेंगे, तो इन दो सिचुएशन व्हाट यू हैव टू डू इज दैट जावा सी हाइफन डायरेक्टरी, दैट इज हाइफन डी डायरेक्टरी, कौन सा फोल्डर में आपको यूज करना है, एंड जावा फाइल नेम. Okay, so what it will be doing, that this folder, that is my package folder, will be created automatically with the help of -d. That is -d is nothing but you will be creating a directory automatically, and java d dot simple java, this is the name of file. So automatically the folder will be created with my package. हमें बताने की जरूरत नहीं कौन से नाम से बनाना, it will be created automatically, and automatic this file will be stored into this folder called as a my package. So physically when we create, -d is used. Okay, is it clear to everybody? Yes or no? Yes, sir. Okay. Yes, sir. But nowadays we don't go for this manual printing because we are using IDs. So this is just for information that -d is used for, there is -d, sorry, -d, उसको -d भी बोलते हैं. This is used for creating a directory of the name which you have provided, and yes को हमें compile करते समय ही करना पड़ेगा, because as soon as you are compiling, automatic the folder will be created and dot class file will be created of this sample. Okay, and that will be putted into this folder automatically. वो folder के अंदर पहला बन जाएगा, because this is the first line, folder बन जाएगा compiling में, इसको execute compile करने के बाद ये folder के अंदर ये class file आपकी automatically save हो जाएंगी. So the very simple syntax, -d dot name of the file and डॉट जावा, दिस विल बी कंपाइलिंग. दो काम करेगा, एक तो आपके कोड को कंपाइल भी करेगा, इसका डॉट क्लास फाइल बनेगा. सेकेंड थिंग इज दैट जो भी आपने पैकेज कीवर्ड में यूज किया था वो नाम का वो फोल्डर बनाएगा आपके उसी लोकेशन में, और उसके अंदर ये कंपाइल की हुई फाइल उसको डाल देगा. इट्स वेरी सिंपल. ओके ओके, नाउ हाउ टू रन इट, वेरी सिंपल. जैसे कंपाइल करने के लिए आपने इस तरीके से उसको कंपाइल किया, जावा सी कंपाइलर दैट इज -d, फोल्डर बना दो सैम्पल डॉट जावा. कंपाइल होने के बाद डायरेक्टली डालना है जावा द पैकेज नेम, दैट इज योर पैकेज, जो पैकेज आपने यहाँ पर लिखा था. ओके, you have to give the name of the package and you just run those files. So my package dot simple, this will be executing the program and you will be getting output. But this is manual way, we are using IDs, तो ये हमें कुछ करने की जरूरत है. This is just for your information कि अगर आपको किसने पूछा
मैन्युअली हम पैकेजेस किस तरीके से बना सकते हैं और हम उस क्लास को कैसे रन कर सकते हैं. दिस इज जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन. यू कैन ट्राई आउट योर सिस्टम. आप घर पे जाके इसको ट्राई करके देख लो. यू विल गेट एन आउटपुट. ओके. पर nowadays no one is working on a console, that is plain editors, all are using that IDs, so this problem will never ever come. Okay, now shall I move further now? Yes, sir. Yes, Now, sir. now encapsulation जैसे मैंने बोला, how to access packages from another package. Okay, so the import keyword. So basically there are three ways for access a package. तीन तरीके से हम कोई पैकेज को import कर सकते हैं हमारे प्रोग्राम के अंदर. Okay, the first thing is that use import package dot star. दिस इज द फर्स्ट टेक्निक. सेकंड वन इज उस पैकेज में से सभी क्लासेस आपको आ जाएंगे. स्टार मतलब क्या, ऑल क्लासेस विच आर प्रेजेंट इन टू दैट पैकेज. ओके. सेकंड टेक्निक इज दैट मुझे उसमें सिर्फ एक ही क्लास फाइल चाहिए, सो आई विल बी यूजिंग इट इम्पोर्ट पैकेज डॉट क्लास नेम. जो मुझे चाहिए वही क्लास आ जाएगी. एंड थर्ड इज फुल क्वालिफायर, यानी जहां पर आपको यूज करना वहां पर वो पूरा पाथ देना है आपको. ओके, सो विल टॉक अबाउट द फर्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड एज अ पैकेज डॉट स्टार पैकेज. ओके, पैकेज डॉट स्टार. व्हाट इज दिस वन? सो स्टार मीन्स व्हाट? Star means what? All classes and interfaces which are present into that package. All classes and interface of that package will be imported automatically into your code. Okay. but but नो सब पैकेजेस. अगर उसके अंदर कोई सब पैकेज होगा तो वो हम यूज नहीं कर सकते. अगर मैंने बोल दिया फॉर एग्जांपल, इफ आई एम सेइंग आई एम हैविंग अ पैकेज कॉल्ड एज माय PACKAG, माय पैकेज, और उसके अंदर मैंने कुछ फाइल्स, बहुत सारे फाइल्स उसके अंदर डाल दिए. ओके, पर उसके अंदर मेरा एक पैकेज है, दिस इज माय अनदर. ओके, ये मेरा पैकेज है और इसके अंदर भी बहुत सारे मेरी फाइल्स है. अगर मैंने इस पैकेज को इंपोर्ट कर दिया तो इसके अंदर के जितने भी क्लास फाइल्स है वो आ जाएंगे. इसके अंदर के जो डायरेक्टली इस फोल्डर के अंदर रखे हुए वो सब आ जाएंगे. बट दिस फोल्डर, सब फोल्डर विल नॉट बी एक्सेसिबल. दिस सब फोल्डर विल नॉट बी एक्सेसिबल बिकॉज ये बार के आगे वाला जो पार्ट है वो लेगा नहीं. दिस इज वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड. सो whenever you are working with this one, small example we'll take it. We'll create one package, इसको हम नाम दिया pack. Okay, that will be containing a class called A. उसमें एक मैसेज हमने डिस्प्ले कर दिया है. देन वी आर क्रिएटिंग वन मोर पैकेज कॉल्ड एज अ माय पैक, और उसके अंदर हमने ये पैकेज को अभी इंपोर्ट करना है बिकॉज इसके अंदर मेरी क्लास ए फाइल है. सो हाउ टू यूज दिस फाइल इज इंपोर्ट स्टेटमेंट. क्रिएटिंग पैकेज मीन्स यू आर क्रिएटिंग अ फाइल, एंड इंपोर्ट मतलब क्या, रिपोर्ट, इंपोर्टिंग द फाइल रेडीमेडली बनाया हुआ. सो अब मुझे ए यूज करना है. सो व्हाट आई विल डू, दिस इज पैकेज डॉट स्टार, यानी इसके अंदर के जो भी पैकेज के अंदर जितने भी क्लासेस इंटरफेसेस ऑल विल बी एक्सेसिबल. ओके, सो क्लास बी, एंड नाउ आई कैन क्रिएट अ ऑब्जेक्ट ऑफ ए एंड आई कैन कॉल द मैसेज लाइक दिस. डायरेक्टली हम उसको कॉल कर सकते हैं. सो यू कैन यूज अ स्टार ऑल्सो एंड यू कैन यूज द ए ऑल्सो. चॉइस इज योर्स. अगर ये यूज किया मतलब एक ही क्लास हम उसके साथ इंपोर्ट कर सकते हैं. एंड इफ आई से स्टार मतलब ऑल क्लासेस एंड इंटरफेसेस विच आर प्रेजेंट इनटू द पैकेज कॉल्ड एज अ पैक will be imported directly with the help of this import statement. Okay, so are you clear with this? Yes or no? Yes, sir. So Yes, sir. package will be creating folder and import will be importing that package into your program. So second technique is that using namespace. बहुत बार जैसे बोलो स्टार नहीं यूज करना, तो सेम एग्जांपल विल गो पैकेज नेम डॉट क्लास नेम. सो क्लास नेम यू कैन यूज इट. जैसे पिछले एग्जांपल में हमने बोला था, अगर मैंने स्टार बोल दिया मीन्स व्हाट, ऑल क्लासेस विल बी इंपोर्टेड. एंड इफ आई एम सेइंग ओनली ए मीन्स अ पैकेज that containing a file called as class file dot a, and I want to use this into my regular programming, so I will be saying that import package pack dot a, means the code which is written into this will be accessible into my class, that is b. So means I can create the object of the class a and I can use it directly, no need for any other operations. So this is package dot class name. Yes, are you getting? Yes or no? Yes. Yes, Yes, sir. yes, sir. Third one, full qualifier. Third way of using packages, full qualifier. Same example we'll take it. This is package, the name of the package is a, उसके अंदर हमने कुछ मैसेज लिखा है. नाउ आई एम क्रिएटिंग वन मोर पैकेज, दैट इज माय पैकेज. ओके, माय पैकेज, and that will be creating a class b. And now see, I want to use this one.
So rather than using import statement over here in the first second line, I am not using this one. Okay, I want to use directly this. So what I will do is the package, this is the folder dot a. Okay, so this is folder dot a, then I'm creating object of this on right hand side package dot a. So using new keyword, I am creating the object of a class A which is present in the package. This is called as a full qualifier name. Okay, so you can use directly also like this, डायरेक्टली द नेम ऑफ द पैकेज और उसके अंदर कौन सी क्लास है उसका आपको ऑब्जेक्ट बनाना है और उसके अंदर के कौन से फंक्शन को आपको यूज करना है, जैसे मैसेज फंक्शन ऑब्जेक्ट डॉट एमएसजी. So this is what you call as a full qualifier name. Are you clear with this one? 3 ways of creating an object or using the import statement packages. Yes. Yes, sir. Yes, sir. The note instruction: if you import a package, sub package will not be imported. This is a thumb rule you have to keep in mind. If the सिर्फ फोल्डर को हमने import किया तो उसके अंदर का सब पैकेजेस को हम import नहीं कर सकते. ये thumb rule है. Don't ever go for don't ever think that you should be. ऐसा questions interview में पूछे जाते हैं कि if you are importing any package, whether the sub packages will be imported or not. और basically बच्चे बोलते हैं yes, if we are using star, it means all packages will be imported. No, star means only classes and interfaces, not folders. ये ध्यान में रखना है. So if you go for importing a package, all the classes and interfaces that are in the package will be imported, excluding the classes and interfaces which are in the packages. So exclude करेगा इस part को. Okay, rest all will be included. Hence we need to import the sub packages also. Now see how the syntax. Never ever write to go for writing import statement before the package. So जैसे हमने ये एग्जाम्पल में देखा है, पिछले वाले एग्जाम्पल में, अगर आपने गलती से भी ये फाइल के अंदर अगर आपने गलती से भी इंपोर्ट को उठा के पहले वाले लाइन में डाल दिया, if the statement you are putting into this class is import first and then the package, this will generate an compile time error. This will generate an compile time error. First line should be package and then it should be followed by the import statement. This is the rule you have to keep in mind. So sequence of your programming should be very systematic. First should be the package keyword, then the import keyword, and then the class keyword. Are you clear with this one? Yes, or no? Yes, sir. Okay. Now sub packages in Java. Packages inside the package is called as a sub package. Package yani folder inside a folder is called as a subfolder. Same way a package inside a package is called as a sub package. It should be categorized as created to categorize the package. For example, you will find many files like system file, string file, reader file, writer file, socket file. Okay, so these are all classes which are present. Okay, now these classes represent a particular group. मतलब reader, writer classes. मतलब क्या? You are reading, writing. मतलब क्या? You are doing some input output operation. Okay. Then if you are talking about the class like socket, means it is either server socket programming. If you are talking about input and output operations, lena dena, it means you are doing with the IO packages. So basically whenever you are working with this type of technique, Java has provided a very systematic domain name, that is domain, company and packages. Okay, domain, company and package. This is the way you will be giving the hierarchy. Okay, so domain, company and packages. So you will be creating like subdirectory like this one. So people go for, whenever people go for projects in live stream, what is this? People will be saying that this is commercial project, Java point, and this is a core part. Okay, so automatically these 3 folders will be created internally with one another, and your file, that is simple file, will be automatically loaded after into this package called as a core package. So this is called as a subdirectories. Subdirectories मतलब क्या? Folder will be containing another folder and another folder will be containing another. You can put any length of hierarchy. ऐसा कुछ नहीं कि 3 है, 4, 5 level. It is up to the level of the complexity of a project. And
whenever you are using compiler, automatically javac -d, these folders will be created automatically. No need for you to create this folder, automatically this will be created. और रन करते समय भी हमें उसी हायरार्की को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे जावा the whole path of your file, and then the name of the file, that is simple, and just push enter, automatically the program will be compiled, that is the class file will be compiled, which is present into these packages. These are called as subdirectories. With the help of java interpreter you will be executing it. Okay, and java compiler will be creating the folders for your file, that is a sample.java file. With the help of -d, these folders will be created automatically. We don't have to take attention about creating a folder into folder. Yes or no? Are you getting or not? Yes, sir. Now next one, how to send the file, class file, to another directory or drive. For example, you are having C drive, उसके अंदर अपनी क्लासेस है. E drive, उसके अंदर सोर्स फोल्डर है, उसके अंदर आपकी a dot फाइल है. Now in this scenario you want to put a class file A, सोर्स फाइल, इन क्लासेस फोल्डर. यानी आपको इसको कंपाइल करने के बाद आपके क्लासेस को यहाँ पर स्टोर करना है ऑन सी ड्राइव इनटू योर क्लासेस फोल्डर. इन दो सिचुएशन हाउ टू डू दिस वन, यानी प्रोग्राम एक जगह पर ई ड्राइव में सोर्स फोल्डर के अंदर आपका जावा कोड है, और सी ड्राइव के क्लासेस फोल्डर के अंदर आपकी इसकी क्लास फाइल कंपाइल होकर जानी चाहिए. तो हाउ टू डू दिस वन, बिकॉज दिस इज एक्चुअली हैपनिंग विद योर आईडीज ऑल्सो. जो आपने इक्लिप्स यूज करते हैं उसमें ऐसा ही होता है. सो for example, package, my package, name of the file, and we have written some small code. So see, whenever I want compile it is so java c is for the compilation. मैं फिर से एक बार एक नेक्स्ट लाइन को लेके जाता हूँ. नेक्स्ट सी, okay, so I want to compile, so I am moving into e drive source. देखो ई ड्राइव के सोर्स फोल्डर में मेरी ए डॉट जावा फाइल है, ऐसा एज्यूम करेंगे. ओके, सो सोर्स नाम का फोल्डर है. आर यू गेटिंग? ई ड्राइव सोर्स नाम का फोल्डर, उसके अंदर ए डॉट जावा फाइल. ओके, नाउ सी दिस ई ड्राइव सोर्स फोल्डर, उसके अंदर मेरा ये सैम्पल डॉट डी फाइल, और मैंने उसके कोड में लिखा है दिस इज माई क्लास, माई पैकेज, यानी ये फोल्डर बनेगा और उसके अंदर मेरी ये फाइल दैट इज सिंपल डॉट जावा फाइल बनेगी. नाउ आई वॉन्ट टू क्रिएट अ फोल्डर दैट इज एंड इन टू another section. So java c compiler will be creating the folder with the help of -d. Now here I will be saying c drive classes, ये मेरा बेस फोल्डर है c drive classes, और इसके अंदर मेरी क्लास फाइल चाहिए ये वाली कंपाइल करने के बाद. so c drive classes, automatically the compiled file will be created, the dot class file, and it will be stored into the classes folder. यानी आपका कोड will be remaining into the source file जहाँ पर आपका कोड है, and the executable compiled file will be stored automatically into the classes folder which is present into your C drive. And how to do this one? Same technique. During compilation, java c make a directory into the location where you want to put it, and the class file will be stored over there. Are you clear with this or not? Yes, sir. Okay, now see, then how to run this one. If you are having class file into your C drive classes and source code into the E drive, now you cannot run a Java file, you will have to run the class file. So how to run this class file? Again, syntax is very simple. Go to source folder, set a path, class path, set a class path, C colon क्लासेस, मतलब क्या, यहाँ पर आने के बाद जो भी क्लासेस होंगे आप अगर उसको रन करने के लिए जाएंगे, जैसे जस्ट लाइक माई पैकेज डॉट क्लास, ऑटोमेटिकली इट विल बी डाइवर्टिंग योर एग्जीक्यूशन टू दिस फोल्डर कॉल्ड एज सी ड्राइव क्लासेस फोल्डर. एंड व्हाट इज सिंटैक्स? सेट क्लास पाथ इक्वल टू सी कोलन क्लास पाथ कोलन डॉट कोलन सेमीकोलन डॉट सेमीकोलन. दिस मीन्स वाज क्लासेस फोल्डर, एंड उसके बाद वाला डॉट all files will be considered whenever you are running those files. So this is the simplest way of creating and running the files into another folder and running into another folder. Are you clear with this or not? Yes?
or no? Yes, sir. Okay. Now simple और एक technique है कि just go into your E drive Java, and then you can put like this hyphen class path, and you put the path of your file, automatically it will run. So this is the way we can do it. This is called as a temporary way. If you are using hyphen class path, means you are using temporary execution, and if you want to make a permanent execution कि आगे जाके पूछना नहीं चाहिए, you can use the set class path. Okay, so set class path can be used for permanent execution or permanent setting the path of your executable file. This is basically done whenever we are working with the projects. Okay, so are you clear with this one? Yes or no? Yes, sir. Yes, Now sir. rule, there this can be only one, there can be only, this is the rule you have to keep in mind, there can be only one public class, there can be only one public class in Java source file. वन, ध्यान में रखो वन, इसके वजह से हमारा बहुत बार एरर आता है. But it must be saved at the public class name. So just like this, if I am having class A, class B and class C, so there will be only one class file, that is C. And how to save it? It's very simple. जिस नाम के आगे public होता है उसी नाम से हमें उसको सेव करना पड़ता है. So it will be saved as c.java. So compiler will be understanding and it will be executing it. Okay, now if I want to have a two public classes, then how to do this one? Okay, whenever it is just compulsory, this is rule, this is rule कि एक ही चाहिए. So if you want to put two public classes into package, then how to do this? Okay, so package, this is the package folder. I will be creating one more, that is public class A, and then another package with same name and public class B. Same folder, one with public and another also with public. This is possible. This is possible. But if you are creating one file, that is c.java, and उसके अंदर अगर आपने ये लिखना चालू कर दे, this will not be acceptable. So what you have to do? Create a separate file, public, it will be executable. Okay? This is the problem basically with the IDs. So are you clear with this one? Yes or no? Yes, sir. Okay. I think आज के लिए बहुत है. Okay. So we'll meet day after tomorrow. I'm expecting that you should run this program. All packages related programs आप उसको run करो. And into your assignment book, I have given assignment number 23, that is on packages. Okay. I am expecting that you should run this program today itself. Okay. So we'll meet day after tomorrow. I am sharing these notes. Better go for understanding the packages in more precise way. This is a separate chapter on packages. और हमने इसको किस तरीके से बना के इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते, कीप इन इनटू डिटेल. ओके, सो शैल वी स्टॉप फॉर द डे नाउ? यस और नो? Yes, sir. ओके, विल स्टॉप. Yes, sir. टुडे आई एम एक्सपेक्टिंग हमें ज़्यादा बर्डन है, पैकेजेस को आप पूरा अंडरस्टैंड करो एंड यू जस्ट ट्राई टू रन द पैकेजेस. ओके. Okay, one demonstration will be done on day after tomorrow, how to create package, and one example will be created. So that is will be done in front of you. Okay, but at least read, and I am expecting that just like Mansi, or should run your programs and you send me your programs. Don't waste your time. Please don't waste your time. Okay, Phil, then we'll stop for the day and we'll meet day after tomorrow. Tomorrow there will be 26 January. There will be holiday. Okay. So good day and take care.